Dear students, Assalamu alaikum. I hope that you all are fine and well. In last lecture, we were talking about some major characteristics of the Victorian age. So now let me start from that point where we left in last lecture. First of all, let me share my screen with all of you. I hope that my PPT will be visible. You all will be able to see the PPT. Okay, so in last lecture, we talked about the characteristics and we talked about the till the sixth characteristic, which was the religion versus science. So till here we talked about in previous lecture. Now I will start from seventh characteristic, which is children's literature. So dear students, when we talk about the children's literature, then the first and the most important thing which comes in the mind, which is that how and when the children's literature was started. So you must know that this genre of literature here, let me highlight it, genre of literature, okay? This genre of literature was introduced in Victorian age, which means before Victorian era there was not the literature related to the children, which means the children were not focused by the writers or the authors of that of those times, because before this era the writers do not used to write especially about children, but this is the era in which the literature about children start producing, and they start producing literature about the children specifically. Some significant reasons behind this type of literature are given below. Now, in these points, I will try to explain to all of you that why the this genre was introduced in Victorian age. What are the factors or what are the reasons which pushed all of the writers or some of the writers to produce the literature for the children? So here the first is that there was a child labor. This is a very important point to discuss, because I believe that whenever we study any work of writer from the Victorian era, then we must get the reflection of child labor in that work, in most of the works. Like whenever you go through from the novels or the written work of the Charles Dickens, then I'm sure that you will find the concept of child labor in most of the novels of Charles. Similarly, whenever you go through from other writers as well, from their works as well, from their novels as well, then you will find the concept of child labor in their works as well. So, due to the child labor, the society began to realize, the people began to realize that this is something which is not good. This is something which should be stopped. This is something which should not be allowed in the society. So, in this way, the literature about children came in existence in Victorian era, because before this era, the writers or the people were not concerned about the children, that what is happening with them, how the child labor is taking place over there, how the children are being tortured. So means these kind of things were not given any kind of priority over there. So here in this era, the priority was given to the children as well, and the literature related to the children. So in this way, when they start discussing about children, about the child labor, and about the injustice which was being happening with them, so they start writing about them, start discussing about them. So in this way, this genre of literature came in existence in Victorian age. Okay, तो अब हमें ये पता चल गया कि ये genre किस तरह से विक्टोरियन एज में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके फैक्टर्स, एक तो था चाइल्ड लेबर, तो इसकी वजह से उनको लगा कि ये जो इनजस्टिस सोसाइटी में हो रहा है, बच्चों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उनको ज़बरदस्ती काम में
दिन रात काम कराते हैं, और वो जो जो उनको जितना काम कराते थे, दे डू नॉट यूज टू गेट द प्रॉपर वेजेस फॉर देयर वर्क। उनका जो काम था उसके लिए उनको प्रॉपर वेजेस भी नहीं दिए जाते थे। दे यूज टू वर्क डेज एंड नाइट्स, they used to work for days and nights, and for that work they used to get some bread in order to eat. सिर्फ एक ब्रेड के टुकड़े के लिए वो इतना दिन और रात काम करते थे, और उनको कोई वेजेस भी नहीं दिए जाते थे। तो ये जब इनजस्टिस सोसाइटी में देखा गया, तो डिफरेंट राइटर्स स्टार्ट राइटिंग अबाउट चिल्ड्रन, they start writing about the social issue, they start writing about this issue, that this kind of thing should not be allowed in the society। इसी तरह से ही इसका इंट्रोडक्शन हुआ। now let's move forward, introduction of the compulsory education। now here, compulsory education for kids, because before Victorian era, the formal education, or we can say that the education was not compulsory for all the children, but this is the first era in the history of English where the education became compulsory for all the children, and they start, getting education. Even the lower class and the middle class also, they were forced to send their children into the schools and to the educational institutes, that they can get education. So because most of the kids were out of schools, now when we trace the history, then we would come to know that before Victorian era, most of the children were out of schools. And in my last lecture, I also told you, I tried to explain to all of you that how the education system was over there. Only the children of elite class used to get education, and that education was also given to them by church. There were not there was not any concept of schools over there. There was the concept of home tuition, and the formal education was being given to them by church. So, and that education was available only for the children of the elite class. So, but for the common people and for the middle class and lower class, there was no any kind of education for them. So now in this era, the compulsory education took place, and most of the children were out of school. So the government and the authorities thought that without education, the prosperity will not take place, and that's why they brought some forms in the education sector. They just brought some changes in the education sector, that education should be for all. There should be not the education should not be only for elite class, but for middle and lower class as well. And with the weapon of education, we can prosper the society, and the society can be developed. Okay, so due to this reason, they made education compulsory for all the kids. Now let's move forward. Here, name Anthony. Anthony is the name of writer, and the Robert Louis. These both are writers. Like when we are talking about the children's literature, then we must, know about these two writers as well. Now, Anthony and Robert Louis are the writers who mainly or generally wrote for the children, which means कि इन्होंने अपना जो भी काम लिखा, मोस्ट ऑफ द वर्क दे रोट अबाउट द चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों का चिल्ड्रन का जो लिटरेचर है वो प्रोड्यूस किया। ना है क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर दे प्रोड्यूस फॉर द चिल्ड्रन। जैसे कि हम अभी अपनी सोसाइटी में जितने भी स्कूल्स हैं और उनको देखते हैं, बचपन में हमने खुद भी पढ़ा हुआ है, तो जो वो स्टोरीज होती हैं जो स्कूल्स के अंदर जो हमारे बुक्स में हमें पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि वो इस तरह से लिखी जाती हैं जो कि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। इवन व्हेन वी वर किड्स, जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमें भी वो स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, और वही स्टोरीज अगर आज के बच्चे पढ़ते हैं सिमिलरली इस तरह की जो स्टोरीज, तो उनको भी इंटरेस्टिंग लगती हैं। अगर विदाउट स्टोरीज के उनको पढ़ाया जाए तो उनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप्ड नहीं हो पाएगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दोज स्टोरीज द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन गेट्स डेवलप्ड, और इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो अब जो एंथोनी और जो रॉबर्ट लुइस है, अब इन्होंने जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया विक्टोरियन एरा में, दे purely wrote about the children, and the stories which should be used in the schools
what kind of lessons should be in the subjects of children, किस तरह के स्टोरीज होनी चाहिए, किस तरह के लेसन्स होने चाहिए, किस तरह का कोर्स कंटेंट होना चाहिए. So such kind of literature was being produced by these two authors. तो ये स्पेसिफिकली जो चिल्ड्रन की जो एजुकेशन थी, ये उसके ऊपर इन्होंने लिटरेचर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट the literature was being produced for the education of the children. एजुकेशन चिल्ड्रन की जो थी उसके लिए फर्स्ट टाइम लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें कि सिर्फ ये एक ही एस्पेक्ट नहीं था जो कि चिल्ड्रन के ऊपर मीन्स वो जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, लेकिन पहले जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चाइल्ड लेबर है, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज है, इस तरह के और भी जो सोशल इश्यूज थे रिलेटेड टू द चिल्ड्रन, तो उनके ऊपर भी लिटरेचर प्रोड्यूस होना शुरू हो चुका था इस विक्टोरियन एज के अंदर. सो इन दिस वे द लिटरेचर about children took place in Victorian age. Now let's move forward to another point. Lots of attention was given to the children and their education. तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अटेंशन किसको दिया गया, ऑब्वियसली दूसरे भी इश्यूज थे, लेकिन एजुकेशन जो स्टूडेंट्स की थी, सॉरी जो बच्चों की थी, चिल्ड्रन की जो एजुकेशन थी, और उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दी गई. बिकॉज इन डार्क एजेस और इन द ओल्ड एजेस द चिल्ड्रन वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ अटेंशन. वो उनको कोई अटेंशन नहीं मिलती थी. आप अगर in order to check this point, that whether this point is valid or not, then when you go through from the previous literature or the literature of old ages, you will find nothing related to the children. Instead, you will find the stories or the books or the literature about their heroes, about their gods, about their beliefs, about their wars, about their traditions. You will find such kind of literature in old ages, but you will never find things related to the children in old ages. So, which means that in old ages, the children were not given any kind of priority, despite there were other themes which they used to give, which were given a lot of priority over there. So that's why the literature used to be produced on those themes and the priorities. That's why in this era, the writers start giving priority to the children and their education. They thought that if the education will not be for all, then it would be very hard to bring changes, or it would be very hard to make the society a better place for living. So in this way, they gave a lot of attention to children and their education. I hope कि आपको ये point समझ में आया होगा. But if you did not understand any of the point, then please note down that thing in your notebook and let me know on the WhatsApp. Okay. Now let's move forward to another slide, which is this is the eighth characteristic of Victorian era, which is economic progress and poverty. Now here I would try to explain to all of you that what kind of impacts came on the Victorian age uh, uh, after इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसके बाद इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स आए थे, पावर्टी की जो लेवल थी वो क्या थी, एंड इसी तरह से ड्यू टू द इंडस्ट्रीज पीपल्स स्टेटस गॉट चेंज्ड. अब इंडस्ट्रीज की वजह से लोगों का स्टेटस चेंज हो गया. अब वो कैसे हुआ, लेट मी एक्सप्लेन टू यू थ्रू बाय एन एग्जांपल, विच इज जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन the Europe was an agricultural society. वो एक agricultural society थी. People used to live in countryside areas. I mean, most of the people used to live in countryside areas, and their means of उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो कमाते थे, जो अर्निंग उनकी होती थी, वो टोटली बेस्ड थी on agriculture. So they used to earn the bread and butter with by the agriculture. But after the industrial revolution,
the industries took place in the cities, so they start migrating from rural areas to the into the cities and to the urban areas, where they they start working in the factories. अब वहां पर जब उन्होंने फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली दे वर गेटिंग मोर वेजेस देन द एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर के अंदर एक अलग सिस्टम होता है कि जब आप एक फसल लगाते हैं, तो यू विल गेट द बेनिफिट्स व्हेन द फसल, वो जब फसल बिल्कुल पक जाती है, एंड देन दे सेल दैट क्रॉप, then after selling that crop they get the benefits from that crop. But somehow अगर कोई मीन्स डिजास्टर हो जाए, डिजास्टर्स इन अ सेंस कि वहाँ पर अगर कोई नेचर का इम्पेक्ट आ जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, एनी काइंड ऑफ अदर नेचुरल डिजास्टर अगर वहाँ पर आ जाए, तो उनके जो एग्रीकल्चर से, जो उनके फसल से, जो क्रॉप से उनके जो फवायद होने थे, वो रुक जाते हैं। तो दैट मीन्स कि उनको इस तरह से भी नुकसान होता था। दूसरा कि वो जो क्रॉप का जो टाइम होता है, आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट नो दैट, एक जो क्रॉप होती है वो इतना जल्दी ही नहीं होती है कि उन्होंने लगाई और वैसे ही बस 5 दिनों में वो तैयार हो गए एंड देन दे स्टार्ट सेलिंग इट। नो, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एट लीस्ट कपल ऑफ मंथ्स, के कम से कम उसको 3-4 मंथ तो लग जाते हैं। अगर जो क्रॉप होती है जैसे कि गंदम की क्रॉप है, तो उसको भी 6 मंथ्स लग जाते हैं, 6 मंथ्स वो उसको लगते हैं, और इसी 6 मंथ तक उनको इंतजार करना होता था। सो विच मीन्स कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी में लोग जब रहते थे, तो उनको डेवलप्ड होने में थोड़ा टाइम लगता था, बिकॉज उनके जो क्रॉप्स होते थे वो जब लगाएंगे, तैयार होंगे, तो देन वो मार्केट में सेल करेंगे, देन उनको जाके वहां से पैसे मिलेंगे, एंड देन दे वुड यूज दैट मनी। बट इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द सिनेरियो वाज डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पर तो उनको कोई क्रॉप का तो वेट ही नहीं करना है, उन्होंने जस्ट काम करना है। सो एज वी ऑल नो दैट जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको किस तरह से पेमेंट मिलती है, मंथली भी होती है, वीकली भी होती है, पर डे का भी होता है। तो इन दिस वे द सोशल स्टेटस ऑफ द पीपल गॉट चेंज। अब उनका जो जिसका जो स्टेटस था, वो उसमें जरूर थोड़ी या ज्यादा जरूर चेंजेस आ गई। उनके द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल आल्सो गॉट चेंज्ड, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी चेंज हो गया। तो इसी तरह से उनके स्टेटस के अंदर ये कुछ चेंजेस आई। अब अगला पॉइंट है द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अब ये जो गैप है, अब गैप को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। yeah. अब देखें इस पॉइंट को हम जब पढ़ते हैं, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाज इंक्रीज ड्यू टू द इंडस्ट्रीज। अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इनकी वजह से रिच एंड पुअर के दरमियान जो गैप था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सच है इसके पहले वो गैप थोड़ा कम था, लेकिन अब ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब उसका रीज़न क्या है? अब उसका रीज़न ये है कि जब इंडस्ट्रीज आ गई, तो उनसे पहले जो पुअर होते थे वो एग्रीकल्चरल्स में काम करते थे, एंड जो रिच होते थे वो ज्यादातर या तो लैंडलॉर्ड्स होते थे या तो वो मर्चेंट्स होते थे। तो इतना ज्यादा गैप नहीं होता था, तो उनकी भी अर्निंग वन और अदर वे वाज कनेक्टेड विद देयर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से उनकी कनेक्टेड थी। तो इसी तरह से इतना ज्यादा गैप नहीं था। बट व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक प्लेस, द गैप इंक्रीज्ड वेरी रैपिडली। एंड हाउ दैट गैप इंक्रीज, दिस इज अ क्वेश्चन। अब वो गैप कैसे इंक्रीज हुआ? बिकॉज एज वी ऑल नो दैट इंडस्ट्रीज के अंदर सरमाया होता है। व्हेन समवन इन्वेस्ट, देन द पर्सन गेट्स द बेनिफिट्स। अब जिनके पास जो रिच थे, उन्होंने इन्वेस्ट इन्वेस्ट किया इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर। जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, दे इन्वेस्टेड 5 रुपीज, दे अर्न 15 रुपीज विद इन नो टाइम। within no time they invested 5 rupees and they earned 15 rupees। कितना जल्दी उन्होंने कमाया। But on other hand, the poor people start working days and nights in the factories. So in this way they got lower wages, and the benefits of the rich class were more better than the benefits from the lower class, or from the people who were poor, are the people who were workers. So in this way, the gap increased very rapidly. इसमें एक और भी पॉइंट आता है। इन 1833 सॉरी इन 1832, यस,
इन 1832 रिफॉर्म्स एक्ट आया था। क्वीन विक्टोरिया जब क्वीन बनी थी तो उसके बाद रिफॉर्म एक्ट इंट्रोड्यूस किया था। अब वो रिफॉर्म एक्ट का मकसद क्या है, उसका नाम ही रिफॉर्म एक्ट है। तो अब उसमें ये था कि जो ब्रिटिश की जितनी भी जो कॉलोनीज थी उसके लिए अलाउ किया गया था सब सिटीजन्स के लिए कि अगर आप किसी भी कॉलोनी के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं या मर्चेंटशिप करना चाहते हैं, तो यू ऑल आर अलाउड टू गो एंड टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस ओवर देयर, यू कैन डू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विद द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश। तो इस तरह से उन्होंने फॉर्म एक्ट के जरिए पब्लिक को अलाउ कर दिया। अब देखें, ये प्योरली उन लोगों के लिए फायदेमंद थी जिनके पास पैसे थे, जो कि रिच थे। एक जो वर्कर है, जो गरीब है, जो पहले से ही पुअर है, तो वो कैसे जाके दूसरी कॉलोनी के अंदर जाके बिजनेस करेगा, वो कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर सकता है? ऑब्वियसली ये उसके उसके तो फायदे की चीज नहीं थी। हाँ, सम हाउ उसके लिए फायदे की उन लोगों के लिए जो कि जिनके पास कोई काम नहीं था, सो दे वर आल्सो अलाउड टू गो देयर एंड वर्क इन डिफरेंट कॉलोनीज एज वेल। तो जो बेरोजगार थे, सो वो उनको तो रोजगार मिलना शुरू हो गया। लेकिन ज्यादा जो बेनिफिट हो रहा था वो फिर भी एलीट क्लास एंड जो रिच तबका था, जो रिच क्लास था, उनको ही हो रहा था, बिकॉज दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अदर कॉलोनीज एज वेल। उन्होंने जब रिफॉर्म एक्ट 1832 के थ्रू दूसरी कॉलोनीज के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया, अपना बिजनेस इंक्रीज किए या नए बिजनेस स्टार्ट किए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दी, तो in this way they start getting a lot of benefits and they become rich, richer than rich। और इसी तरह से उनका जो गैप था बिटवीन पुअर एंड द रिच, दैट गैप इंक्रीज्ड वेरी रैपिडली, और वो गैप बढ़ता ही गया। सो दिस इज द गैप, एंड इसी तरह से ये गैप इंक्रीज हुआ। आई होप के मैंने एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया है और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हाउ द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ओवर देयर इन विक्टोरियन एज, और पावर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे था, एंड वहाँ पर सोसाइटी के जो रिच जो क्लास था या एलीट क्लास था वो किस तरह से कर रहे थे, क्या काम करते थे, किस तरह से रहते थे, एंड व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ द पुअर पीपल। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट मिलता है। एंड देन सिर्फ इसको इस तरह से बार बार मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से लेना है कि आप सपोज के उनकी पावर्टी को पढ़ रहे हैं, देन यू हैव टू एनालाइज द पावर्टी ऑफ विक्टोरियन एज इन टुडेज एरा। हमारी स्पेशली आप अगर टुडेज एरा की करते हो, या स्पेसिफिक होके अपने कंट्री की पावर्टी करते हो, या उससे भी स्पेसिफिक होके आप एक प्रोविंस की पावर्टी को कंपेयर करते हो इसके साथ, और भी स्पेसिफिक होकर आप एक सिटी की पावर्टी को स्पेसिफिक करते हो, देन उसको और आप स्पेसिफिक करके ब्रेक डाउन करके आप एक एरिया की करते हो, लाइक लयारी की पावर्टी, एंड यू कंपेयर विद द पावर्टी ऑफ सदर टाउन। तो आपको इस तरह से कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना होता है। और ये सिर्फ कंपेयर नहीं करना होता है, आपको एक मैसेज मिलता है कि भाई वहाँ की पॉवर्टी क्या थी। और मेजोरिटी आपको दूसरी बात आपको जो जहन में रखनी है कि उस पॉवर्टी जो कि विक्टोरियन एज के अंदर थी, ठीक है, आपने उसके अदर फैक्टर्स भी देखने हैं। सच है कि देखें, यहाँ पर जो टीचर होता है आपको एक गाइडलाइन देता है, आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ताकि आपने रेस में भागना तो शुरू कर दिया। यहाँ से सच है आप हैदराबाद की तरफ भाग रहे हैं, तो कोई एक बंदा है जो भागने में बड़ा तेज है, लेकिन वो कोई अलग ही डायरेक्शन में भागे जा रहा है, तो वो कितना भी तेज भागेगा वो हैदराबाद नहीं पहुंच पाएगा। एक अगर दूसरा बंदा है जो कि भले स्लो ही स्पीड में जा रहा है, लेकिन करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो ही अपनी मंजिल पे पहले पहुंचेगा। लेकिन जो तेज जा रहा है लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रहा है, वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका मकसद ये है कि आपको टीचर एक डायरेक्शन देता है, आपने उस डायरेक्शन के थ्रू उसी डायरेक्शन के थ्रू जाना है और उसको डिटेल्स में पढ़ना है। अब पॉवर्टी के आपने और भी फैक्टर्स अगर अपनी तरफ से आप पढ़ते हैं तो ये वेल एंड गुड होता है, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी। और आप वहाँ पे जब दूसरे फैक्टर्स को पढ़ते हैं पॉवर्टी के, और वहाँ के जो एलीट क्लास है उनके फैक्टर्स पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे काम किए, तो यू हैव टू अप्लाई दोज ऑल फैक्टर्स ऑन अ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के ऊपर आप वो अप्लाई करें, देन आप देखें कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी के अंदर जो पॉवर्टी है उसके क्या फैक्टर्स हैं,
और किन किन फैक्टर्स की वजह से पॉवर्टी ज़्यादा हो रही है, और आप फिर जो इलीट क्लास के वहाँ के जो फैक्टर्स है उनको अप्लाई करें अपनी सोसाइटी के, कि उनकी क्या प्रैक्टिसेस थी, हमारे इलीट क्लास की क्या प्रैक्टिसेस हैं, और हम किस तरह से अपने जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म कर सकते हैं। एट लीस्ट आप अगर दूसरों की पॉवर्टी ख़त्म नहीं कर सकते, तो क्योंकि हम जो भी इधर रहते हैं, मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू द मिडिल क्लास और द लोअर मिडिल क्लास, तो हमारा ताल्लुक उससे है, तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं कि वो फैक्टर्स को हम इम्प्लीमेंट अपनी सेल्फ के ऊपर करें, कि भाई किस तरह से उन्होंने रिफॉर्म एक्ट के थ्रू या थ्रू द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सोर्सेस दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग, दे स्टार्ट देयर बिजनेस, और किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को इन्वेस्ट करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाया, और वो जो पॉवर्टी का शिकार थे तो उन्होंने कौन कौन से इश्यूज थे जिनको उन्होंने फेस किया। अब जो जो इश्यूज उन्होंने फेस किए, तो हमने क्या करना, सिमिलरली अगर उसी से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, कोई बातें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो हम उनको कैसे अवॉइड करें, उनको अवॉइड करके और किस तरह से हम एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी डायरेक्शन ढूंढकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं, उसके साथ साथ अपने पड़ोसी, अपने अपने सोसाइटी, जितने ज़्यादा लोगों को हम फ़ायदा पहुंचा सके, हम उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं। तो इसका असल मकसद ये है कि हमने इस पर्सपेक्टिव में पढ़ना होता है, इस कॉन्टेस्ट में हमने चीज़ों को देखना और समझना और अंडरस्टैंड करना होता है। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, कि अब आपको अच्छा सा इसका एग्जांपल भी मैंने दे दिया, कि अच्छा ये मज़े की बात ये है, ये जो मैंने आपको इतना डिटेल में समझाया है पॉवर्टी को आप किस तरह से मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके फैक्टर्स को, तो ये सिर्फ इस पॉवर्टी और रिच के ऊपर नहीं है। जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने का जो कोर रीज़न है वो यही है कि आपने उस टाइम को पढ़कर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है सोसाइटी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर किस तरह से चेंजेस लानी है। अगर हम कहीं पे कोई गलती कर रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शन में, तो उसको हमने करेक्ट डायरेक्शन कैसे देनी है, हमने बेनिफिशियल कैसे बनना है फॉर अ सेल्फ, फॉर फैमिली एंड फॉर सोसाइटी। हम क्योंकि हमने सिर्फ सोसाइटी के ऊपर बर्डन नहीं बनना है, बल्कि हमने सोसाइटी को कुछ देना है। अपने घर वालों के लिए आप शोल्डर बन उन घर वालों का शोल्डर बनेंगे आपके, ताकि उनके जो भी आप उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप फेस करें, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व करें। So in this way, we have to study, we have to analyze each and everything which we are studying in this course. I hope that I am making sense. Now let's move forward to another point, which is living standard of people also got improved. अब ये तो मैंने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि जब ऑब्वियसली लोगों के पास जब सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है, और सोर्स ऑफ इनकम उनका जब इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी चेंज होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट पॉइंट यहाँ पर जो है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुए। वो बहुत ज़्यादा एक ही एग्जांपल दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। जैसे कि आप देखें, हर एरिया के अंदर उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है, उनका रहने सहने का जो तरीका होता है, द वे पीपल लिव इन एवरी एरिया इज क्वाइट डिफरेंट देन अदर। सच एज अगर हम यहाँ पर लियारी की बात करते हैं, तो हियर whenever you go in the streets of the Liari, you will find some kind of dressing which you will never find in another area. In another area, when you will go in Clifton or the defense area, then you will find some kind of dressing which you will never find in another area. So in this way, आप हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं वो उनका रहने सहने का तरीका है। सो व्हेन सिमिलरली, अगर जो कंट्री साइड एरियाज में जो जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, देयर ड्रेसिंग इज टोटली चेंज देन द ड्रेसिंग ऑफ सिटी। उनका रहने सहने का द वे द पीपल लिव इज टोटली डिफरेंट देन द पीपल लिव इन सिटीज। तो टोटल डिफरेंट होता है। तो अब यहाँ पे उनके जो क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे चेंज हुए। अब क्योंकि पहले वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, मोस्ट ऑफ द पीपल वर लिविंग इन कंट्री साइड एरियाज, so their living standard was like the people who were living in the villages in the rural areas. So when they start migrating from rural areas to the cities, so there in cities they encounter something new, new way of living their life, new dressing styles, new
fashions, new kind, means each and everything was new. So when people came from there, so they start living with them, start working with them. So there they got uh, a lot of changes in their living. So in this way वहां पर जो लिविंग स्टैंडर्ड थे लोगों के वो बिल्कुल चेंज हो गए. आई होप कि आपको इस तरह से समझ में आया होगा. पीपल, पुअर पीपल यूज टू वर्क डे एंड नाइट्स इन द फैक्ट्रीज. अब ये जो यहाँ पर एक मिनट, डे एंड नाइट्स, लेट मी हाईलाइट इट. अब ये जो थे, जो वर्कर्स थे, वो दिन रात काम करते थे फैक्ट्रीज के अंदर. मोर इम्पोर्टेंटली ये जो वर्कर्स होते थे उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होते थे. आई एम टॉकिंग अबाउट विक्टोरियन एरा, बिकॉज व्हेन विक्टोरियन एरा इंडस्ट्रियल sorry urbanization took place, people came from villages to the cities, so they had no place to live. उनके पास इतनी तो दौलत नहीं थी कि वो वहां पर आते ही अपने घर खरीद सके. पीपल वर वेरी पुअर. वो जो जिनके जो अफोर्ड कर सकते थे किराए के घर, तो वो उन्होंने ले लिए. बट दोज पीपल हु वर not able to afford the home on rent, then they used to live on the streets. They used to live far away from the factories as well, and then they used to travel for a long time in order to get on their work, to reach over there and to start work. So they were suffering a lot. The poor people used to live on the streets. They used to eat on the streets, and they used to use uh, public toilets, and in this way they were living over there. And वो बहुत ज़्यादा sufferings का, more importantly they were not given the proper wages as well. उनको जो proper wages हैं वो भी ठीक से नहीं मिल रहे थे. अब वो क्योंकि इंडस्ट्रीज वर इंट्रोड्यूस्ड at that time. Industries का introduction था. So they were giving very low wages to the workers को बहुत ज़्यादा लो वेजेस दे रहे थे. सच एज के एक चीज़ है जो कि वर्कर्स के उसको दे रहे थे 1 रुपीज़, तो उसी को वो जो ओनर्स थे वो सेल कर रहे हैं 15 रुपीज़. इतना ज़्यादा प्रॉफिट ओनर को जा रहा है, लेकिन वर्कर को सिर्फ और सिर्फ इतना दे रहे हैं कि वो अपना गुजारी मुश्किल से करे. So in this way, they were not given proper wages as well. So this was the economic condition of Victorian era. Still, when we go through from the economic condition of Victorian era, then there is a lot to discuss. There are so many things to discuss, but each and everything cannot be discussed in one lecture. So that's why I have just given you some examples from the history. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, उनको हाईलाइट किया है, उनको एक्सप्लेन किया है. बट जब हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करेंगे, पॉवर्टी की बात करेंगे, तो ये बहुत 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 ज़्यादा मटेरियल है. अगर इफ़ यू वांट टू गो थ्रू इन मोर डिटेल्स, देन आप इकोनॉमिक कंडीशन इन द पॉवर्टी आप सर्च करके आप उसको और डिटेल्स के साथ भी पढ़ सकते हैं. बट यहाँ पर जो मुझे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स लगे, मुझे लगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. दीज things must be discussed with the students, or the students should know about these things. आपको एक यूं समझें कि ये झलक दिखाई गई है कि इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉवर्टी की झलक क्या थी विक्टोरियन एरा में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द करंट सिनेरियो ऑफ ओन सोसाइटी. कि हमारी ओन सोसाइटी के सिनेरियो को समझने के लिए इसकी झलक दिखाई गई है. बाकी अगर इनकी डिटेल्स में बात करेंगे तो देयर इज अ लॉट टू डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विक्टोरियन एरा. Now let's move forward to the final characteristic of our topic, which is supernatural literature. अब ये supernatural literature बड़ा interesting है, और when I was studying this, so I enjoyed a lot while studying this literature. In this era, the supernatural literature was also liked a lot by the laymen. अब ये जो layman है, it means common man. I hope कि आपको पता होगा, but जिनको नहीं पता तो मैंने बता दिया. लेमन मीन्स कॉमन मैन, आम आम लोग. तो अब ये जो लिटरेचर है सुपर नेचुरल, उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता था आम लोगों की तरफ से. आम लोग जो थे बहुत ज़्यादा उसको लाइक करते, सुपर नेचुरल लिटरेचर लाइक. अब ये कैसा होता है सुपर नेचुरल लिटरेचर? लाइक गोथिक टेल्स, उनकी कोई गोथिक टेल्स थी. ड्रेकोला, आपने ड्रेकोला को तो अक्सर सुना होगा. शेरलॉक होम्स, आपने इसको भी सुना होगा. वेम्पायर्स, आपने इनको भी सुना है. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स
व्हाट द सुपर नेचुरल लिटरेचर यहाँ पर आसान हो रही है, तो आई एम मीटिंग माई सेल्फ और अजान ख़त्म होती है तो उसके बाद दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हेलो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट सुपर नेचुरल लिटरेचर। अब 2 मिनट वेट करते हैं, आसान हो जाए। So what was in supernatural literature? This is ये इसी तरह से है कि सुपर नेचुरल लिटरेचर में यह है कि ड्रैकुला की स्टोरीज आपको देखेंगी कि एक ड्रैकुला आता है, वो इंसानों का खून पी जाता है और जब तक उसको इंसान का खून नहीं मिलता तो वो उसके सिवा जिंदा नहीं रह सकता है। तो सच काइंड ऑफ स्टोरीज आर कॉल्ड द सुपर नेचुरल लिटरेचर। अब सुपर नेचुरल में हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो जिसमें आप आपकी जो अकल है, जो हमारी अकल और फहम है, जहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है और हम तस्वुर नहीं कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ की कोई एग्जिस्टेंस है या ऐसी कोई बात है, और वहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट, उस पॉइंट से कुछ स्टार्ट हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड सुपर नेचुरल। वो सुपर नेचुरल कहलाता है। तो अब जैसे कि ड्रेकोला, अब हमें तो बिल्कुल ऐसा तो जिंदगी में ना हमने कभी किसी ने रियल एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि कोई इस तरह से इंसान है जो इंसानों को मार कर उसका वो खून पीता हो, और वो ड्रैकुला हो या अदरवाइज वट एवर, या शेरलॉक होम्स। अब आपने ये ज़रूर शेरलॉक होम्स नावल पढ़ी होगी। अब इस नावल के ऊपर क्या है कि इसके ऊपर एक सीजन भी बनाया गया है इसी नेम से। तो इफ़ यू हैव नॉट read this novel, then you must watch this season, Sherlock Holmes, and then you will have the fair idea that what actually supernatural literature is. शेरलॉक होम्स में क्या होता है कि वो एक बंदा शेरलॉक होता है, उस शेरलॉक वो किसी भी जो केस सॉल्व करता है। अब यहाँ जहाँ पे भी जो भी इशू होता है, कोई मर्डर हुआ है, क्राइम हुआ है, कुछ भी हुआ है, चोरी हुई है, तो वहां पर वो जाता था और चीज़ों को एक नज़र यूं घुमा के देखता था और उसको सब पता चल जाता था कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो अगर किसी
कि किसी ने घड़ी पहनी होती है, किसी ने चाय का कप पकड़ा होता है, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ों को वो, आप जब इस सीज़न को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई उसके माइंड में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वो प्रोसेस वो उसको फ्लैशबैक देता है, बैकग्राउंड का वो चीज़ वहाँ पर जो पड़ी हुई है, कोई शीशा टूटा हुआ, फ्लैशबैक उसको देता है कि किस तरह से कितने बंदे थे, 3 थे, 4 थे, 2 थे, 1 था, वो इस तरह से आया, किस तरह से शीशा टूटा, किस तरह से ये टुकड़े नीचे आए। तो मीन्स इन दिस वे वो पूरी सिचुएशन की एग्जैक्ट जो उसकी इंटरप्रिटेशन होती है वो करता है, वो इंटरप्रिटेशन करके, और उसकी जो जजमेंट होती है वो करता है कि फलां बंदे ने क्या ऐसे किया वैसे किया। तो दिस इज सुपर नेचुरल, ये इंसान के इंटेलिजेंस से बियॉन्ड है, बहुत ज्यादा बियॉन्ड है, और किसी इंसान के बस की ये तो बात कम से कम नहीं है कि इंसान को इस तरह से पूरी सिचुएशन बता दे कि यहाँ पर ये चीज हो गई है। 100%, एक बार भी नहीं, तुक्के से ठीक है। अगर हम नेचुरली, हम क्या होता है कि इंसान अगर किसी चीज की इंटरप्रिटेशन करता है, 10 चीजों की आप इंटरप्रिटेशन करें, तो बिलीव मी आपकी 2-3 की तो जरूर करेक्ट होगी, भले 6-7 की गलत हो जाए, 2-3 की जरूर करेक्ट होगी। लेकिन शेरलॉक होम्स का यह है कि वो एक एक चीज की जो इंटरप्रिटेशन करता है वो 100.10% करेक्ट होती है, और वो गलत होता ही नहीं है उस इंटरप्रिटेशन में। तो दिस इज बियॉन्ड रियलिटी, ये रियलिटी से बियॉन्ड है। वो चीज जो भी रियलिटी से बियॉन्ड हो, जिसमें मिथ का कॉन्सेप्ट आता हो, दैट इज कॉल्ड सुपर नेचुरल लिटरेचर। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस। उसके बाद आप वेम्पायर्स को देखें। अब वेम्पायर्स का तो कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। इसका एग्जाम्पल मैं इस तरह से देना चाहूंगा, टुलाइट सेगा। ये एक बहुत मोटी नॉवेल है, और आई थिंक इसके वॉल्यूम्स भी हैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट टुलाइट सेगा जो है, मैंने इसका एक ही जो मेन टुलाइट सेगा है वो नॉवेल मैंने, इतना मोटा है, मैंने पूरा तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने थोड़ा पढ़ा। सो देन आफ्टर दैट आई वेंट फॉर मूवीज टुलाइट सेगा। अब वो जो टुलाइट सेगा है वो मूवी मैंने देखी, उसके जितने भी 6 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, वो सब देखे। तो अब देखें, दिस इज, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेम्पायर्स, के वो किस तरह से लोगों की गर्दन पे वो दे बाइट ऑन द नेक ऑफ द पीपल, एंड देन दे सक द ब्लड फ्रॉम द वेन्स, एंड देन दैट पर्सन बिकम्स वेम्पायर एज वेल। अगर किसी वेम्पायर ने किसी को बाइट कर दिया तो दैट पर्सन वुड टर्न इनटू द वेम्पायर, वो खुद वेम्पायर बन जाता है। सो मीन्स such kind of literature is called supernatural, और बिकॉज दिस इज बियॉन्ड द रियलिटी, ये रियलिटी से बियॉन्ड है। और हम कैसे यार, एक मीन्स आई एम वेरी सरप्राइज, आई एम सॉरी टू यूज सच अ वर्ड लाइक यार, बट जब हम इस तरह का लिटरेचर देखते हैं कि जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को काटता है, देन दैट बिकम वेम्पायर। और वेम्पायर की जो स्पीड है, यू नो द स्पीड ऑफ वेम्पायर, यू नो द स्ट्रेंथ ऑफ वेम्पायर, उसके पास जो ताकत है, कितना भी मोटा दरख्त हो उसको एक चपेट मारेगा, वो दैट 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 ट्री विल फॉल डाउन, वो टूट जाएगा। एंड द वेम्पायर हैज द स्ट्रेंथ टू ब्रेक डाउन एनीथिंग, एनीथिंग he can break with one single hand. He can jump like a monkey, in even more than monkey भी इतने jumps नहीं कर सकता जितना एक vampire कर सकता है। So this is beyond the reality. और when you watch the movie Twilight Saga, then you will also have another supernatural idea, which is वो उसमें भेड़िए होते हैं, wolves. The wolves are also over there, so they are the humans, वो इंसान होते हैं, but uh, when the situation comes, in a specific situation, they turn from man, they turn into the wolf. तो वो वॉल्फ बन जाते हैं, और वो फिर बिल्कुल ओरिजिनल वाला भेड़िया बन जाते हैं, वो दौड़े होते हैं, दे बार्क लाइक अ वॉल्फ। सो दिस इज द सुपर नेचुरल लिटरेचर। सो इन दिस एरा, इन द एरा ऑफ विक्टोरियन एज, this literature was also being published or being produced, and the people used to like it a lot. The people of Victorian age were kind of fan of the supernatural literature. इस literature के जो Victorian era के जो लोग थे, जो आम लोग थे, they used to like it a lot. उसके बहुत ज्यादा उसके फैन होते थे, उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। So on the basis of their likeness, the writers were producing this kind of literature in this era. So these were the 9 characteristics of Victorian era.
and each character I explained each and every characteristic in details. I explained it with examples, and I also tried to explain to all of you that how to compare that characteristic and that society with our own, how to implement such kind of things which were good over there, and how to avoid the things which were bad over there. So I tried my best to explain to all of you these things. I hope that I made it clear. यहाँ तक करेक्टरिस्टिक्स तक अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना भी आई हो तो यू मे आस्क फ्रॉम मी. आई एम here to explain to you. I will explain to you in on WhatsApp group as well. Sorry, WhatsApp, because the WhatsApp group की privacy लगाई हुई है. Admins only, because the students were spamming the group, spamming the groups, because there were so many useless messages, and whenever we used to come online on the group, then there were so many messages. अब जब सब मैसेजेस को गो थ्रू करें तो पता लगता है कि क्या पूछा जा रहा है. तो सो आई आस्क योर सीआर, तो कोई भी अगर इम्पोर्टेंट क्वेरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो यू मे कंसल्ट विद हर और विद हिम, एंड देन थ्रू योर सीआर आप हमें बता सकते हैं. बट यू गाइज कैन, अगर कोई भी काम हो तो यू मे आल्सो टेक्स्ट मी पर्सनली एज वेल. So this is what which we talked about. These all the characteristics of Victorian era, and I hope कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. Still one thing is remaining in this whole topic, which is themes. Some major themes of Victorian era, and these are six major themes which I found very important, and I thought that these themes must be studied. Must You must know about these themes, that what actually they are all about, and what kind of message is given to us through these themes. इन themes के जरिए हमें कौन सा वो मैसेज है जो कि दिया जा रहा है विक्टोरियन सोसाइटी की तरफ से, और वो जो मैसेज है वो क्या है, और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो दिस इज व्हाट हियर इट इज. और अब ये थीम्स भी हैं जो जो कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं इन डिटेल्स. सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली वन थीम, विच इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. आई होप कि इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एंड आपको अच्छे से समझ में आएगा. आई विल ट्राई माई बेस्ट to explain to you these themes. But let me start with industrial revolution. So this is the first theme. जैसे आपको मैंने ऑलरेडी बताया है पिछले लेक्चर्स में, इस लेक्चर में पहले कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया विक्टोरियन एज के अंदर. जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो वहां पर ग्रोथ, पॉपुलेशन के अंदर ग्रोथ होना शुरू हो गई. अब यहाँ पर पॉपुलेशन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है विक्टोरियन एज के दौरान. क्यों? क्योंकि बिकॉज बिफोर पीपल वर लिविंग इन कंट्री साइड एरिया, दे हैड नॉट लॉट ऑफ सेंस. लोगों को सेंस इतना ज़्यादा नहीं था. लेकिन जब वो अर्बनाइजेशन की तरफ आए, वहाँ पर मिलजुल कर बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में रहना शुरू कर दिया इन्होंने. सो ड्यू इसका इम्पैक्ट आया उनकी ज़िंदगी के ऊपर. जब उसका इम्पैक्ट आया तो उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट ये था कि उनकी जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर ग्रोथ होना शुरू हो गए. एंड द पॉपुलेशन ऑफ विक्टोरियन एरा इंक्रीज्ड अ लॉट इन विक्टोरियन एरा. तो इस एरा के अंदर वो जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई. प्रोग्रेस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ. अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आया इन लोगों की ज़िंदगी में. अच्छा, ये जो प्रोग्रेस आया ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर आया. ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई और बाकी कुछ भी नहीं. नो, ईच एंड एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ वाज डेवलप्ड, स्लोली बट डेवलप्ड. सो उनका जो एक एक स्पेयर था, एक एक जो एस्पेक्ट था जिंदगी का, वो डेवलप्ड होना शुरू हो चुका. बिकॉज अगर उनसे पहले हम देखते हैं तो उनके पास रहने का जो तरीका था वो द मोस्ट ओल्ड एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग, उस तरीके से वो रहते थे. तो बट नाउ इन अर्बनाइजेशन वो सिटीज में आ गए, तो सिटी, द लाइफ ऑफ सिटीज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ विलेजेस. तो वहाँ की लाइफ और सिटी की जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट होती थी. तो इस ये जो एस्पेक्ट है उनकी लाइफ रहने का, वो ऑब्वियसली उसके अंदर प्रोग्रेस आया. देन द वे दे यूज टू ईट. अब देखें जो विलेजेस, द पीपल हु वर लिविंग इन कंट्री साइड एरियाज, द पीपल हु आर अनएजुकेटेड, देयर वे ऑफ ईटिंग इज इंटायरली डिफरेंट देन द पीपल हु आर एजुकेटेड. जो एजुकेटेड लोग हैं उनका जो
वे ऑफ ईटिंग है वो हमेशा डिफरेंट होता है। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि थ्रू द हेल्प ऑफ नॉवेल्स दे स्टार्ट लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट, क्योंकि इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए उनका पहला शर्त ही यही, उस बंदे को प्रायोरिटी दी जाती थी जिसको लिखना और पढ़ना आता था, या जिसको पढ़ना भी आता हो और लिखना भी आता हो, तो उनको प्रायोरिटी। सो दैट मीन्स इट वाज कंपल्शन ऑफ द पीपल टू लर्न। ओके, तो ये कंपल्शन था उनको कि उनको तो पढ़ना है। सो व्हेन दे स्टार्ट लर्निंग, सो ऑब्वियसली दे स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ सेंस अबाउट सो मेनी थिंग्स। तो बहुत ज्यादा चीजों के बारे में उनको सेंस आना शुरू हो गया। तो जब उनको सेंस आया तो सो देयर ईटिंग बिहेवियर आल्सो गॉट चेंज्ड, उनका जो ईटिंग बिहेवियर था वो भी चेंज हो गया। सिमिलरली उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो भी चेंज हो गई। तो विच मीन्स कि ये जो उनकी जिंदगी का जो एस्पेक्ट था, दे आल्सो गॉट चेंज, इट वाज आल्सो इम्प्रूव देन बिफोर। तो इसी तरह से उनकी जिंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स थे, उन सब के अंदर प्रोग्रेस देखा गया और प्रोग्रेस आया। सो ड्यू टू दिस रीजन आई हैव रिटन हियर प्रोग्रेस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। विक्टोरियन एज के जो लोग थे उनकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आया, इवन सारे एस्पेक्ट्स के अंदर प्रोग्रेस आया। ओके, उसके बाद देखते हैं कि डिस्कवरीज आल्सो टुक प्लेस। अच्छा, डिस्कवरीज इसको हम हाईलाइट करते हैं because this is important term. Discoveries also took place in this era. अब इस एरा के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। अब जैसे कि अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दी है, लेकिन बिफोर गोइंग टू दैट एग्जांपल लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल दैट एज आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट industries came in Victorian era. In Victorian era, there were the industries, there were the factories, there was the urbanization. So these things together were not possible without scientific revelation. So because there was the scientific revelation, there was the science, there were the discoveries. So on the basis of science, these all things took place over there. ये सारी चीजें हुई हैं साइंस की बेस पे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया साइंस की वजह से, अर्बनाइजेशन हुई साइंस की वजह से, जो फैक्ट्रीज आई साइंस की वजह से, जितनी भी आपकी मशीनरी है वो आई साइंस की वजह से, आपकी ज़िंदगी में कम्युनिकेशन इजी हुई साइंस की वजह से, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम अच्छा हुआ साइंस की वजह से। विच मीन्स द the basic reason behind this all facilities are the things which happened over there was that there was a science. The basic reason is science. तो ऑब्वियसली अब ये सारी चीजें हो रही थी तो डिस्कवरीज हुई हैं। डिस्कवरीज इस एरा में हुई हैं जब ये सारी चीजों का इंट्रोडक्शन हुआ है। विदाउट डिस्कवरीज इट वाज इम्पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल था। अब दूसरा एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर दिया है विच इज ये जो डार्विन की आपने बुक पढ़ी होगी, डार्विन्स बुक, इसमें लिखा था, ये है इसका टॉपिक है ऑन द ओरिजिन ऑफ, ये बुक का नेम है डार्विन्स बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब इसमें क्या है कि द इवैल्यूएशन, द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हमें बायोलॉजी में पढ़ा गया द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, या एग्जैक्टली आई थिंक यही है नेम। अगर इफ आई मेकिंग मिस्टेक तो आप इसको खुद करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन है, ये जो चार्ल्स डार्विन ने जो दी है, ये जो डार्विन्स की थ्योरी है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द फेमस थ्योरी इन द हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री की सबसे फेमस थ्योरी है, जिसने इस थ्योरी के अंदर इसने बताया कि इंसान की इवैल्यूएशन कैसे हुई है। पहले इंसान बंदर होते थे, बंदरों से देन द डेवलपमेंट टुक प्लेस एंड इट टुक एजेस टू टर्न मंकी इनटू अ मैन। तो वो जिस तरह से एक इंसान का जो सफ़र केव से, जो उसका सफ़र, जो जंगल से सफ़र स्टार्ट होता है टिल दी ऑफिस तक आता है, तो इसी तरह से एक मंकी का सफ़र इंसान बनने तक ये भी एक लंबा सफ़र है। इट टुक एजेस टू बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम मंकी टू मैन। तो ये बहुत लंबा सफ़र है। सो इन दिस वे द थ्योरी ऑफ एवेल्युएशन, the Darwins tried to explain the evaluation of species, especially the evaluation of mankind, कि mankind की evaluation कैसे हुई है। So such kind of theories were introduced or were discovered or took place in Victorian era
एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड दैट ये जो डार्विन्स का बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आर द ये 1859 में पब्लिश हुआ था। लेट मी हाईलाइट कि ये 1859 में पब्लिश हुआ था और इस बुक के अंदर थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन है। और इसके सिवा अगर और डिस्कवरीज देखते हैं तो यहाँ पर देखें एक्सरे, जो आजकल हम एक्सरे अपना कराते हैं, तो ये जो एक्सरे का इंट्रोडक्शन था वो भी विक्टोरियन एरा के अंदर ही आया। वो क्यों आया? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस था, इंडस्ट्रीज थी, तो इसी वजह से एक्सरे का इंट्रोडक्शन भी इसी में हुआ 1895 में। 1895 में एक्सरेज भी यहाँ पर आ गए। तो आई होप कि यहाँ पर डिस्कवरीज भी थी, प्रोग्रेस भी था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। तो ये सारी चीज़ें हैं इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बिकॉज दीज ऑल थिंग्स are concerned with only one thing which is science. Industrial revolution is concerned with science. इसी तरह सिमिलरली डिस्कवरीज आर कंसर्न विद साइंस। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं साइंस के साथ, तो जब भी इनको मैंने एक साथ रखा है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और ये जो फर्स्ट हमारा थीम है ये भी समझ में आया होगा। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में मैं बकाया जो 5 थीम्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा और ये जो पूरा हमारा टॉपिक है विक्टोरियन एज, इसको मैं ब्रीफली समराइज करके आपको बता दूंगा कि व्हाट एक्चुअली विक्टोरियन एरा टॉक्स अबाउट। और इसके बाद हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई बिलीव कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। सो बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच अदर टॉपिक्स एज वेल इन डिटेल, ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको समझ में आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो आई होप के यू विल फाइंड दिस लेक्चर वेरी यूजफुल फॉर यू, not only for the sake of papers but for the betterment of yourself, for increasement of your knowledge and for the betterment of your course as well. तो इसीलिए आप इसको आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय।